हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल फुल थोड़ा 94। तो यार थंबनेल देख के आप सबको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। I am Rajesh Guganani, Guganani Automobiles, dealer of Royal Enfield since 2015. I thank you, all of you, for being here for the launch of our new, the all new Bullet 350. Here is our the India. Yeah. एक ही मॉडल है रॉयल एनफील्ड का जो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन में है। हम लोग का 9 एकड़ से अभी तक आपको देख के आ रहा है। तो इसका वजह है कि ये लॉन्जेविटी इसका लॉन्ग जितनी है, उसके बाद आपका डिपेंडेबिलिटी और उसका जो रॉयल एनफील्ड का ये प्रीशियस मेटल है, इट्स नॉट ए ब्रांड। ये आपका एक इमोशन है। हर किसी के पास एक इमोशन अटैचमेंट रहता है, तो इसी हिसाब से ये एक इमोशन हो गया है रॉयल एनफील्ड का। जो हर एक बंदे को जो पहला बड़ा मोटरसाइकिल चाहिए आता है वो बुलेट होता है, ठीक है। तो बुलेट का जो है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट और एक ऑनर जो होता है ना, वो बुलेट चलने का मतलब है कि एक ऑनर फील करता है। तो आप लोग जो भी यहाँ पे हैं, जैसे कि हम लोगों का नया कोई लॉन्च होता है या होता है, पहले कस्टमर को फील आता है कि बुलेट के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी सर्च करता है। हर एक ग्रुप में होते हैं, हर एक कम्युनिटी में बुलेट में चले रहता है। जैसे कि हम लोगों का पंजाब में एक टेम्पल है, वो टेम्पल को बोलते हैं हम लोग बाबा मन टेम्पल, जहाँ पे बुलेट की पूजा किया जाता है। और पंजाब में और हरियाणा में आपको एक गैंग है, तो सब बुलेट रहता है, जहाँ पे पंजाब में हर बुलेट का ही चलता है। और आपका बहुत तक अभी आप लोग देखे होंगे जहाँ पे बुलेट ही चलता है। रॉयल एनफील्ड का हर जगह में बुलेट का ही कुछ नाम रहता है। तो बुलेट एक ब्रांड नहीं है, तो इमोशन बन गया हर किसी के लिए। जैसे कि जो भी नया बंदा है, अभी यंग जनरेशन के लिए भी आ गया। तो हम लोग अभी जो नया बंदा है तो कंटिन्यूशन चल रहे हैं। आप अभी यहाँ पे देखिए 1932 से अभी भी चल रहा है वो बुलेट। I'll just take a couple of minutes. I'm an army guy, so now of course I'm a veteran. So Bullet was I bought it at 1990, I think, and I went all around the country. It was a 350cc one. We went to Khurdha, all possible Ladakh sectors everywhere. I met with a couple of accidents also. Lekin there is such a safe bike, I'll tell you. Safety मामले में nobody can beat a Bullet. I don't know अभी क्या रेट है, जो अब हमारे टाइम पे if you hit a Bullet, the handle used to break. That time we didn't have big things like big helmet and all that. होता था, लेकिन if it used to break, तो शॉक से आपको एक्सीडेंट में बच जाते। That was one. I don't know that why fiber handle was that. अभी भी वही होते होंगे। That was one good point. बाकी it's a ride. Like being an army guy, we are used to having a couple of pegs every night. Okay. Then ये घोड़ा जैसा, you start it, they'll take you home. They'll take you home. Understood? Safely आपको घर ले जाएगा। माने आप 4th गियर में चलाओ उसको,
नो नॉकिंग 20 की स्पीड में। ये वो गाड़ी नहीं है जिसमें आप 80, 90, 150, दिस इज नॉट दैट बाइक। ये उल्टा, यू एंजॉय अ स्लो राइड आराम से एंड यू कमांड द रोड रास्ता को आपके अंडर कमांड लगता है जब आप घोड़ा चला रहे हो तो रास्ता आपकी है। So there are few good features of Bullet. So I would advise all these young lot, buy it, enjoy it. It's a bike, best bike I've ever ridden. Baki now Ram है जो foreign bike है, compare with that. But Indian ground में this is the best. So I think I've done a lot for you. It's a good bike and possibly I'm planning to go. I dispose of my old bike. So मेरे plan है again to go for a new one. At this age again, go for a big bike, right? Thank you. Thank you very much, sir. You have two people who have already bullet. They have already. I would like to Saurav bhai who will share the story about his bullet. So please come up here. Good afternoon, everyone. बुलेट ऐसा कीड़ा है जो मेरे अंदर हमेशा से रहा है। पहला गाड़ी भी खरीदा जब भी बुलेट ही लिया, हर बार बुलेट दूसरा बेच देता हूँ, आप नहीं चलाएंगे बुलेट, ऐसा ऐसा भारी लगता है। जिस दिन बेचता दूसरे दिन फिर से शोरूम पे खड़ा हो जाता हूँ, मुझे बुलेट फिर से लेना है। तो ऐसे मैंने 500cc भी चलाई है, ओल्ड बुलेट भी चलाई है, अब का नया जनरेशन भी चला रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास था कुछ दिन पहले मेटियोर था, सारे को मैंने बहुत इंजॉय किया है। और ये कैसा हो गया जो मेरे ब्लड के साथ ही चलता है। आज भी फिर से नया बुलेट बुक करूंगा, फिर चलाऊंगा कुछ साल, फिर से बुलेट ही चलाऊंगा। अब और कुछ गाड़ी दिखता ही नहीं जो बुलेट के बगैर मैं खरीद सकता हूँ। तो बहुत ही रिलायबल और बेहतरीन गाड़ी है। Thank you all for coming here. Now it's time to unveil our new bullet. So I request Rajesh sir to and Sujit sir please unveil this bullet. वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पटवा बैंड जो लगा वो आपका प्रीमियम बैंड जो ब्लैक गोल्ड में आएगा।
मिलिट्री वेरिएंट जो है उसमें आपको 2 कलर मिलेगा। उसमें आपको मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक रहेगा। जिसमें हाँ ये वाला नहीं, ये स्टैंडर्ड वाला है मिलिट्री रेड। उसमें आपको वही बैचेस वगैरह मिलेगा, लेकिन वो आपका लेवल में मिलेगा। ये आपका बैच रहेगा, 3D बैच रहेगा, वो उसमें आपको लेवल बैच रहेगा। वो उसका टैंकी का कलर ही रहेगा खाली, बाकी बॉडी सब ब्लैक रहेगा। उसमें आपको ब्लैक फिनिश में नहीं आएगा, उसका आपका क्रोम फिनिश में रहेगा। रिम वगैरह हो या इंजन वगैरह हो, सब क्रोम फिनिश में रहेगा। उसमें आपको USB पोर्ट भी मिलेगा, सिंगल डिस्क में आएगा, सिंगल चैनल डिस्क में आएगा। और उसका प्राइस जो रहेगा आपको एक शोरूम 1,73,500। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, स्टे ट्यून्ड। बहुत ही जल्द इसका राइड रिव्यू एंड वॉकअराउंड रिव्यू आने वाला है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, जस्ट लाइक, comment, share and subscribe the channel for more updates. Till then, respect, value, right, wear all the gears. Meet you in the next video. Tada.